We'll continue our discussion now. We had seen the basicity of amines, correct? Right. And now we want to begin with the amines का शायद प्रिपरेशन हो गया था हमारा, अभी हमको रिएक्शन देखने, करेक्ट ना? रिएक्शन प्रिपरेशन करेक्ट, वो हमने देखा था हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस वगैरह, देखा कि नहीं? हो सर, आपण प्रॉपर्टीज पण बघितलेले पण तिथेच थांबलेलो. सब प्रॉपर्टीज आल्सो करेक्ट ना? सो राइट डाउन नाउ. तो पहला आपका कौन सा था? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, करेक्ट? सो राइट डाउन नाउ रिएक्शन दैट action of nitrous acid. Okay, action of लिख लो टॉपिक को, किसके ऊपर करना है एक्शन? अमाइंस के ऊपर देखना, ठीक है? एक्शन ऑफ अमाइंस ऑन नाइट्रस एसिड. We have 2-3 parts we are going to see. One is your प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों में के रिलेटेड आप लोग इसको देखने वाले, ठीक है? ओके, देख लिया सबने? ठीक है. Okay, now let's see now action of nitrous acid. Okay, nitrous acid क्या है आपका? HNO2, करेक्ट. और हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कैसे अभी अमाइंस को रिएक्शन होने वाला है ना. If I take RNH2, okay, 1 degree amine. Okay, तो पहला पार्ट हम लोग देखेंगे क्या? We'll begin with primary amines, right? प्राइमरी अमाइन देखने वाले, क्या देखेंगे अभी इसमें? RNH2 को ले लिया. सेकेंडरी अमाइन मतलब N के ऊपर 2 R ग्रुप, टर्शियरी अमाइन मतलब N के ऊपर 3 R ग्रुप, करेक्ट ना? लाइक दैट. RNH2 plus HNO2, right? But we know HNO2 is prepared how? HNO2 is prepared in situ, करेक्ट ना? इन situ मतलब किसको किसको रिएक्ट करते हैं हम लोग पहले भी देखा है. NaNO2 plus क्या? Plus we do HCl, correct? NaNO2 plus HCl. This is called as the in situ preparation. मतलब यहीं पे आपको क्या मिलता है? यही से आपको मिलेगा, देखो यहाँ HNO2 यही से मिलता है आपको, correct ना? You get HNO2 here only, and this HNO2 which you have got here only, correct? That comes here. Okay, that is called as your in situ preparation. Getting my point? और NaCl तो साइड में हट जाता है. तो ये रिएक्शन होते होते आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है. कौन सा इंटरमीडिएट मिलता है? करेक्ट. सर तुम्ही तो सेकंड का लिहिलंय, आपण पहिलीच रिएक्शन बघतोय ना. ओके, नाही तो 1च आहे. अच्छा, असं 1 आहे तो, ठीक आहे. हा ठीक आहे सर. माझी थोडी स्टाईल वेगळी लिहायची, तू पण 1 सारखं दिसतोय, ठीक आहे. अलग लक्षात. तर याच्यात काय होणार? इन सिटू प्रिपरेशन झालं याचं. Now what will happen? This N is there and this N is there. So what we get is R N2 plus and Cl minus is the first intermediate we are getting. Now behind this happening, correct? Behind this happening, there is a big what? There is a big mechanism involved. वो अभी नहीं देखना है, आगे हम लोग देखेंगे, है ना? नाइट्रस टेस्ट करके अगला रिएक्शन आने वाला है, वो उसमें देखें. अभी से हमको देखना है क्या इंटरमीडिएट आ रहा है, ठीक है? क्या क्या मिल गया हमको? हमको मिल गया RN2 plus and then
Cl माइनस, करेक्ट। तो राइट ना, अब इन दोनों में से क्या है, Cl तो ये से आ गया हमको, N यहाँ से आ गया, Cl आ गया, करेक्ट, राइट। And now what happens is that further when this Rn2 plus is added in water, Rn2 plus Cl minus plus water, you know, what we get is, we get first of all an alcohol, correct, देखो, we get an alcohol plus with that ये N2 को लेते हैं हम लोग, and with N2 we also take what, बचा क्या अभी, H और Cl बच गया, plus we get what, plus we get HCl. Understand my point? So we got an alcohol plus N2 plus HCl. Okay. Now this reaction happened in two steps, correct? But the final product is what, RNH2 plus HNO2 gives me ROH plus N2 plus HCl, like that, correct ना? Yes or no? Like that. अब देखो पार्ट ए में क्या क्या बचता है, इसका बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या रहेंगे? Can anyone suggest what could be the byproducts coming in here? N2 plus Cl minus में Na का क्या हुआ, Na का Na भी बचा हुआ है ना, NaCl लिख सकते हैं हम लोग, प्लस वी गेट ऑल्सो वाटर ना, H कहीं भी नहीं आया, इसका भी ऑक्सीजन है, so we get what, we get what, plus we get water also, okay, like that, clear now? N2 plus plus NaCl. Now if I give you something like this, C2H5NH2 plus HNO2 in presence of NaNO2 plus HCl, correct? What product you will get, you have to write, है ना, ये ऊपर का टाइम पास नहीं, ये नहीं लिखने, directly you want to write what product, and always remember that temperature here is taken as 273 to 278 Kelvin, okay, here also 273 to 278 Kelvin, so like that you want to write the product here, लिख लो आप product इसमें, and then meanwhile we'll also push on to your secondary amines. Okay, we are pushing on to what, secondary amines. Okay, secondary amines में क्या लिखते हैं हम लोग लेंगे R2NH plus I'll take HNO2, and same here also in situ preparation किसका, NaNO2 plus HCl, और ये टेम्परेचर कितना 273 to 278 Kelvin, करेक्ट ना, NaCl करेक्ट, जहाँ से भी HNO2 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सिंपल दिख रहा है ना, ये तीनों लोग, करेक्ट, तीनों लोग क्या दे रहे हैं, ये वाला H, ये H, ये H और ये O मिलाए क्या बनाएंगे, ये मिलके पानी बनाएंगे, ठीक है, H और O मिलके हमको पानी देंगे एक तरीके से, तो इन वे वन इट विल गिव मी वाटर, और बचा क्या अपने पास, करेक्ट, तो H और H हट गया है ना, और एक O भी हट गया, तो बचा क्या हमारे पास, व्हाट ऑल थिंग्स रिमेन विद अस, R2 हमारे पास बचता है, R2 बचता है, N2 बचता है, और एक ऑक्सीजन बचता है, इसका हमको मिला के कुछ बनाना है, तो क्या बनता है इसका मिला के, देखो यू गेट R2 N, पर एक NO बच गया ना, N डबल बॉन्ड O, करेक्ट, R2N N डबल बॉन्ड O प्लस क्या है, प्लस क्या बना, पानी, correct, plus we got water, right? So very very simple reaction this we have, correct, here also, so you can write down here also, C2H5 NH plus HNO2, same reagents gives me what product, आपको लिखना है, ठीक है,
You only have to write the product. Okay. और इसमें मैं आपको और एक बताऊँ, CH3 है, N है. सर ते पहिल्या रिएक्शन मध्ये तो डबल बॉन्ड नाही आहे ना एन एन मध्ये? इथे का नाही प्रोडक्ट साइड कुठल्या NN मध्ये? सेकंडरी अमाइन्स मध्ये पहिल्या रिएक्शनच्या प्रोडक्ट साइडला. नाही नाही, सिंगल बॉन्ड. ओके. ओके. इसका भी प्रोडक्ट लिखना है आपको, ठीक है. अभी लिखो मत इसको, रुको मैं थोड़ा. तो ये सेकेंडरी अमाइंस we saw, and now say third we push on to is your tertiary amines. अभी टर्शियरी अमाइंस का क्या प्रॉब्लम बच्चों? टर्शियरी अमाइंस में प्रॉब्लम क्या है कि H है नहीं उसके ऊपर, है ना. We have directly what R3N. Okay, R3N plus HNO2 gives me what? In presence of NaNO2 plus HCl, and then 273 to 278 Kelvin, है ना, टेम्परेचर रखा है इसमें. प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमको यहाँ पर? तो होता क्या है बच्चों कि क्या हो जाएगा इसमें? ये N के पास तो लोन पेयर है बराबर में, तीनों R से जुड़ा है, लेकिन वो किसके ऊपर अटैक कर सकता है? N विल अटैक ऑन द H ओनली. करेक्ट. तो क्या बन जाएगा? R3NH प्लस एंड NO2 माइनस. करेक्ट. ऐसा कुछ बनेगा ये R3NH ये प्लस एंड देन यू गेट NO2 माइनस. सिमिलरली इफ यू टेक CH3 thrice N plus HNO2. करेक्ट. क्या आएगा मुझे यहाँ पर? वो आपको लिखना है. ओके ठीक है, करो अभी बचा हुआ करो, सेक्शन पार्ट कंप्लीट करो बचा हुआ. समझ में आया ना आपको क्या करना है? और एक मैं आपको देता हूँ, ये भी ट्राई करो थोड़ा सा. थोड़ा स्पेशल केस है. सर हॅलो सर. बोलो ना. सर ते सेकंडरी अमाइनचा सेकंड एक्झाम्पल दिला ना तुम्ही, ते C2H5 एकच कंपाऊंड आहे तिथे, R2 असायला पाहिजे ना ते? हो बरोबर. सर आणि ते थर्ड एक्झाम्पलचं आन्सर लिहून दाखवता का एकदा? थर्ड एग्जांपल सेकंडरी अमाइनचं थर्ड वाला तुम्ही कम्प्लीट करायला सांगितले ते. सेम ना. H आणि H आणि O चाललं राहील. काय उरणार? ओके सेम थिंग, रिमूव द नाइट्रोजन. Is called as N-nitroso. N-methylamine. Okay.
N के ऊपर नाइट्रोसो, NO group is called as nitroso group. Okay. And this compound which will get formed here, that will be called as what here? N nitroso diethylamine. N nitroso diethylamine. ठीक है, करो इसको फटाफट, बाकी ये कंप्लीट करो. So 1 minute to complete this. I'll just be back till that time. You'll do that. Okay, done. Got this answer for this one? सर ते नॉमेनक्लेचर कसं केलं सांगू शकता का सेकंडरी अमाइनचं? N वरती हा नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक आहे.
हा है ना. एन वरती हा नायट्रोसो ग्रुप. ओके है ना, एन नायट्रोसो. ठीक आहे, हा नायट्रोसो. आणि परत एन वरती काय, एन वरती मिथाईल. आणि हा पूर्ण ग्रुप याला सोडून सगळ्यांना याला काय म्हणतो आपण, याला म्हणतो अमाइन. आहे की नाही, लाईक दॅट. अच्छा येस सर. आणि मग त्याच्यावरचं एक्झाम्पलचं हो सॉरी सॉरी, स्ट्रक्चर काढून टाकलं. वेट वेट वेट, दिस इज नॉट अमाइन. एक मिनिट. दिस इज aniline ना पाहिजे तिकडे. हम्म. हा, so that compound is what, methyl aniline. Right? This compound is aniline, right ना, like that. येस सर. तेच. आणि त्याच्यावरचं ते स्ट्रक्चर काढून दाखवता का? कुठल्याच, तर ते एन नायट्रोसो असायला पाहिजे की ते नायट्रोच राहणार. नायट्रोसो ग्रुप. ओके सर. तो दिस इज C2H5 twice, correct ना, N double bond O plus H2, like that. सेम आरच्या जागी फक्त C2H5 टाकायचं होतं. ठीक आहे, मग एन वरती परत काय, नायट्रोसो ग्रुप. आणि काय, हा मग डायइथाईल. इकडे एन नायट्रोसो एन डायथाईल असं का नाही आलं? नाही, मग इथाईल एकच ग्रुप आहे ना आपल्याकडे, इथाईलच ग्रुप आहे ना आपल्याकडे. समजा इथे मिथाईल, दोनदा एन का नाही आलं? तेच म्हणतोय मी, असे नाही. C2H5 N then N double bond. ठीक आहे, आणि हा C2H5 अजून एक. करेक्ट. सो दिस N इज सफिशियंट टू टेल दॅट ह्या N वरती काय नायट्रोसो ग्रुप आहे. अँड देन डायइथाईल, आय डोंट नीड नॉट टेल ना की N इथाईल अँड देन अगेन इथाइलमाइन, असं म्हणण्यात काय अर्थ नाही. बरोबर की नाही, हो की नाही. सो वेन आय एम सेइंग दॅट डायइथाइलमाइन, इट्स अज्युम दॅट की ह्या N वरती दोन्ही आहेत इथाइल ग्रुप्स, लाईक दॅट. I can write that N nitroso, N ethyl, and then again ethylamine. But there is no point in writing that. Even if I write N nitroso diethylamine, it's assume that की बाबा समजून जातं आपलं की N वरती दोन सिक्वेन्स ग्रुप आहेत. अलग लक्षात. ओके येस सर. आणि टर्शरी अमाइनचं नोमेनक्लेचर दाखवता का? हो, टर्शरी अमाइनचं डायरेक्टच येईल, ट्रायइथाइल अमाइन. आहे की नाही. नाही प्रोडक्टचं. आधी प्रोडक्ट बघू आपण काय. ठीक आहे, प्रोडक्ट आलं का. प्रोडक्ट आलं कोणाचं. आले सर, पण ते आता नाव नाही माहिती त्याचं, कसं सांगणार. ठीक आहे. तर काय येणार, हे येणार आपलं CH3 thrice NH plus and then NO2 minus. Correct na? This is your trimethylamine. Correct. Okay. And this compound, if you see, this reactant is called as what? This is nothing but your N comma N dimethyl aniline, correct? Right now, N comma N dimethyl aniline, right? And what product you got for this now? See, getting product here is very difficult now. Difficult in the sense that something different is going to happen here, correct? Not the ordinary thing which happened regularly on top, correct? Correct, not the element things, ordinary thing which happened in the top. Here what will happen, because there is resonance, product remains something different. Okay, water है, लेकिन क्या है अपने पास यहाँ पर H तो नहीं है इसके पास. Okay, H नहीं है, and then because of this steric hindrance, this lone pair also cannot go and take the H from here, and then N can attack. That is not possible. So what happens is that simple product is formed, CH3 twice N, and then something like this, N double bond O, plus you get water. Okay,
तो H कहाँ से निकलता है? H यहाँ से निकलता है. H comes out from here and then you get a nitroso product from here also. Like that it happens here. Getting my point? This is a special case of steric hindrance. Like that it happened here. Understood this point? येस सर. सर ह्याचं नाव काय होईल? तुम्ही सांगा काय होईल नावाचं. तर वरच्याचं पण सांगा ना. हो याचं नाव काय होईल सांगा ना तुम्ही. Any guess? What could be the name? हा प्रोडक्ट बघूनच नायट्रोसोचे तुम्ही पाहिले ना आता नॉमेनक्लेचर याचे नॉमेनक्लेचर पाहिले तुम्ही. सर नंबरिंग एन पासूनच चालू करायचं ना? हो नाही आता इथे 4 वरती येईल ना. 4th वरती हा येईल. हा. लाईक मग 4च लिहायचं ना की ते त्याला प्रेफरन्स द्यायचा? 4च लिहा. 4 नायट्रो पासून चालू करा. बरोबर ना. स्टार्ट फ्रॉम 4 नायट्रो. सर मग ते 4 नायट्रोसो एन कॉमन डाय मिथाइल आणि बेन्झिन का? नाही बेन्झिन नाही येणार आता. ॲनिलीन तर आहेच ना आपला तसाही. ॲनिलीन लॉस नाही होते ना आपल्या. ॲनिलीन तसंच आहे बघा. हा ॲनिलिन. मग काय होईल? मग 4 नायट्रोसो एन कॉमन डायमिथाइल ॲनिलिन. Okay. 4 nitroso n common dimethyl aniline. Very good. Very good. Very good. That is correct. That is absolutely correct. So what will happen here is how it will come? 4 nitroso. Okay. N comma n dimethyl aniline. ठीक आहे. तर तुम्ही म्हणाला आता इथे काय आहे? इथे आम्ही इथे लिहिलं डायइथाइल लिहिलं, इथे n comma n आहे. इथे we can put this is also the right way. I can even write dimethyl amine. You know, even if it's done, it's assumed some many times, correct? So many times you will find like that also. Many places. So at that time you should not get confused. Getting my point, you know. This should be very clear, correct? 4 nitro, correct, like that. 4 nitro salt, okay. सर 4 नायट्रो कसं काय म्हणजे त्याला कसं प्रेफरन्स दिला आपण आधी? 4 nitro so. We are writing name for aniline, correct ना? Now कोणाला देतो आपण? aniline ला देतो. Okay. Aniline is there. And now what I am writing is that on this aniline what is happening? 4 nitroso is there. First इसको नाम दे दिया. उसके बाद n के ऊपर क्या क्या है वो कर दिया और बाद में aniline को नाम दे दिया हमने. Okay. Like that we have written. तो आप बोलोगे n डाइमिथाइल पहले लिखते बाद में ये लिखते हैं. नो नो नॉट लाइक दैट. वी हैव टू राइट सब्स्टिट्यूएंट कुछ रहेगा उसके ऊपर तो वो पहले लिखना पड़ेगा आपको, है ना. If some substituent is there, you have to write first. Getting a point, na? Like that. येस सर. Is it clear? येस सर. Others also? ठीक है. अब इसका नाम क्या रहेगा ऊपर वाले का नाम? CH3NH plus है. If I have R4NH plus, that is quaternary ammonium salt. Correct, na? Yes or no? It is quaternary ammonium salt. Okay. Or we say that, no? Quaternary, correct? Quaternary ammonium salt and then the X minus. So NO2 minus is, you know, nitro group that we'll leave aside, right? But we are more focused on to naming this one. Correct? अब हमको मेन किसका नाम देना है? मेन हमको इसका नाम देना है. Okay.
दिस इज योर ट्राइमिथाइल हाइड्रोक्सी करेंगे क्या? नाम देंगे हाइड्रोक्सी या नहीं? हाइड्रोक्सी कशाला? हाइड्रोक्सी नहीं देंगे। क्या देंगे? हाइड्राइड देंगे। हाइड्राइड हाइड्राइड देंगे क्या, या अमाइन देंगे बस? अमाइन होईल ना? हाँ, सो इट विल बी ट्राइमिथाइल अमोनियम आयन kind of, correct na? Trimethyl ammonium, this is amine group, correct, but when there is plus charge we substitute with ammonium, correct na? I cannot simply write amine ammonia or amine like that in that. So what I have to write, I have to substitute it with ammonium. So whenever it comes to 4 I have to write it as trimethyl ammonium ion. Getting my point? आणि सिंगल एम ना, काय काय? सिंगल एम ना, तुम एम एम वाला ते नाही ना हे. नाही नाही, सिंगल आहे की सिंगल आहे. म्हणजे N लिहायचं तर आहे का? लिहायचं तर लिहू शकतो आपण. बघा लिहायचं लिहू शकतो आम्ही आता एन एन है ना, असं पण लिहू ते शकतो. लिहून द्या नेमकं बोर्डवरच. हो, हे बघा दिस इज सिंपल ना. दिस इज व्हॉट टर्शियरी अमाइन. दिस आय कॅन राईट इज व्हॉट, है ना, I can write it as like this also, n comma n dimethyl, you know, what I will write, methanamine. I like that also I can write, correct, methanamine, you know, or I can write simply what, trimethyl amine, correct. Okay, now here also I can write n dimethyl, you know, methan, correct, methan ammonium ion, right, but best is write that trimethyl ammonium ion, correct now. Why to confuse more? Trimethyl ammonium ion. ओके, लिख लो इसको फटाफट. सर ते डायमिथाईल नंतर काय लिहिलंय तुम्ही? इथे हा मिथेनामाइन. येस सर. मिथेनामाइन. कारण तो काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाऊंडच फॉर्म होत आहे ना. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुठे आहे? आणि NO2 मायनसचा का ते नुसतं तसं लिहिलंय? नुसतं असं लिहिलंय आपण, जनरली ब्रॅकेट मध्ये लिहितो ना. H3O प्लस ऑल्सो वी राइट लाइक दिस ओनली, करेक्ट ना. हा, येस सर. ओके, डन. Okay, clear now. Any other doubt anyone has in this? Otherwise we'll move ahead. ठीक है. Now before going ahead, what we'll do now is that we'll see a nitrous acid test. Okay,
तो उसमें आपका मैकेनिज्म भी इसका कवर हो जाएगा। नाइट्रस एसिड टेस्ट। ओके, क्या करेंगे अभी ये देख लेंगे पहले नाइट्रस एसिड टेस्ट, सो दैट द मैकेनिज्म पार्ट आल्सो गेट्स कवर्ड। करेक्ट ना? Yes, like that. Okay. So you see now nitrous acid test. Nitrous acid क्या है हमको पता है. This is a nitrous acid, right? And we know that कि HNO2 HNO2 के यदि मैंने react किया किस किस के साथ? If I react with the primary amine RNH2, or if I secondary amine R2NH, or if I with tertiary amine R3N, you know what all products I get? Just now we saw this. Here we get what? Alcohol plus N2 plus water. Here I will get what? Here I will get R2N and double bond O, correct? And here I get what? R3NH plus NO2 minus, just now we saw, correct? Now important point we want to see is that इसको भी कभी कभी हम लोग 3 degree को भी heat किया ना हमने, what we get is here also, this is also when once it's heated, you can get an alcohol from here, alcohol plus some nitrogen R2N, ऐसा भी प्रोडक्ट मिलता है हमको यहाँ से. Okay, if it is heated, what you can get is R2N and then N double bond O we can get. Correct. Like that we can get. Now step 1 is that what we want to do is that preparation of nitrous. सबसे पहले हम nitrous acid बनाते हैं हम लोग. Step 1, okay, is your preparation of nitrous acid. Let's try to prepare this acid first. Now what will happen now? Very simple. We know in situ preparation. NaNO2 plus HCl gives what? NaCl plus HNO2. Nitrous acid आ गया यहाँ से. And now once nitrous acid is got, what will do? We'll push on to step 2, correct? Where we see that, in presence of acid, correct? In presence of acid, any acid you take, HNO2 क्या बन जाता है? HNO2 takes some different form. So in presence of acid, suppose just nitrous acid himself is an acid, correct? Or basically HNO2, if it is surrounded by H plus ions, what will be its condition? इसका स्थिति क्या होगा, इसका गति क्या होगा? तो have a look. Now if I have a H plus kept here and right here I put what? Your HNO2. Okay, happens what is that lone pair on the oxygen, it goes and attacks on the H, correct? H को जाके attack कर देता है वो, है ना? And then what you get is you get something like this. You get H2O plus and then N double bond O, correct? And now H2O plus, we know that it's very highly unstable group, correct ना? What it water gives, पानी बाहर आया था, आपको रहता बचता क्या आपके पास? बचा आपके पास ये NO plus, and this NO plus is called nothing but your nitrosonium ion, correct? नाइट्रोसोनियम आयन. अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको. क्या? हाँ बोलो. ते HNO2 मध्ये फर्स्ट रिएक्शन लिहिलंय ना RNH2. हाँ टॉपची रिएक्शन तिकडे H2O कसं आलं प्रोडक्ट मध्ये HCl लिहिलं होतं ना लास्ट स्लाइड मध्ये. कारण ते NaN+Cl- वाला फॉर्म होतं. right, correct. We had written, correct ना? HCl we had written in that. But final step we had written H2 only. नाही सर, फायनल स्टेप मध्ये HCl होतं आणि त्याच्या मागच्या स्टेप मध्ये H2O लिहिलेलं NaCl सोबत. Okay. नहीं, हाँ right, correct. Yes, we had HCl with that. टू रिलीज होतं त्या स्टेप मध्ये येतच होतं. हाँ तो फर्स्ट स्टेप मध्ये आपण लिहिलं होतं काय? NaCl and H2O. हो. हा. Correct. Second step we write HCl. ठीक है.
बट प्रॉब्लम इज ना, हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं देख रहे, करेक्ट ना? हियर वी आर नॉट सीइंग एनी इंटरमीडिएट और नॉट कंसिडरिंग बाबा Na, करेक्ट? Na2 और HCl पिक्चर में है ऐसा नहीं मानते हुए यदि रिएक्शन को लिखे तो हमको आना क्या चाहिए प्रोडक्ट में? हमको आना चाहिए प्रोडक्ट में वाटर. HCl will come in the final step but we will get convert cancelled. ऊपर वाले इसके साथ कैंसिल हो जाएगा कि रिएक्टेंट में HCl है और ये HCl कैंसिल हो जाता है और फाइनल हमको बचता है वाटर. तो दो रिएक्शन हमने तर स्टेप मग वॉटर पण तर होईल कॅन्सल. असं कसं म्हणजे ते RN2 प्लस Cl मायनस प्लस वॉटर रिएक्शन झाली, अल्कोहोल आणि HCl भेटलं. पण मग वरच्या रिएक्शन मध्ये पण तर रिएक्टंट मध्ये H2 आहे. एकच आहे ना मॉलिक्यूल. हे बघा मी तुम्हाला दाखवतो. RnH2 प्लस काय आहे? HNO2 है ना? दिस गिव्स मी व्हाट वी हैड रिटन R2N plus Cl minus, correct? Plus NaCl plus what you get is correct ना? This is what we had written. नाही, एकच H2 होता. हे दोन लिहिले होते आपण. सर एकच होतं H2. सर एकच होता. एकच होता. ठीक आहे. What we can do now here? ठीक आहे, ती रिएक्शन बॅलन्स करून नव्हती लिहिली मी. But as now we are seeing that why here water should come. Let's try to balance it out. Okay. त्या R2 नसणार ना, Rच असणार ना इथे. तर इथे N2 plus आहे. करेक्ट ना? फर्स्ट स्टेप इज करेक्ट ना? Rn2 plus Cl minus plus twice of H2O. कारण इथे दोन ऑक्सिजन आहेत ना, बरोबर की नाही? Here there are how many oxygens? There are 2 oxygens. Okay. That's why I've written how many? Twice of H2O. Okay. और एक H का 4 H कहाँ से आए? यहाँ से 2, यहाँ से 1 और एक वो यहाँ से आया. HCl का एक H आया. ये 4 HCl मिलके 2 वाटर. ठीक है, क्लियर? इतना पहला स्टेप क्लियर हो गया क्या? अंडरस्टूड? येस सर. ठीक है. N2 कहाँ से? यहाँ से एक, यहाँ से. आप क्या करेंगे? इसको ले लो. Rn2 plus Cl minus, and as intermediate we take. Okay. And now what we are doing is that again we are putting one molecule of water, right? In order to get what? In order to get an alcohol, plus what we get is here is this HCl plus, correct? This is what we had written. Plus N2 we get, correct? Na? Okay. ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखें, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल कैंसिल हो गया और ये एक मॉलिक्यूल कैंसिल हो गया. ठीक है ना? एक मॉलिक्यूल बचता है वाटर का. तो फाइनल व्हाट इज RnH2 plus HNO2 gives me what? Gives me alcohol plus N2 plus. Yeah, now how HCl gets cancelled? So HCl gets cancelled by this one. Here we also HCl was there on in the reactant part. Okay. मतलब if I write it HNO2 like this, okay, HNO2 को यदि मैं ऐसे लिख दूं, तो क्या क्या बचता है यहाँ पर? I remains what is with me is that Na plus and Cl minus remains on the left hand part, correct? So while seeing also what we can do is that सर बोला. सर त्या HCl मधला आपण एकच ऑलरेडी वॉटर बनवताना वापरलाय ना. करेक्ट. सर मग परत ते कॅन्सलेशनला कसा वापरता येईल? राइट. ठीक है. दिस इज ऑलरेडी बीन यूज्ड अप. नहीं आपण रिएक्टंट लिहितो फक्त आता, like that we are writing reactants. R also we have used ना here. R तो इधर आ गया वैसे भी, करेक्ट ना? R तो वैसे भी इधर आ गया है. ROH बचा है अपना, N2 बचा है और ये एक वाटर मॉलिक्यूल बचता है, करेक्ट?
one water molecule remains like that. So this is what the main thing we have written here. We had written then this one water molecule, and then the ions which remain, yeah, they will be there. Correct ना? आपका क्या क्या बचता है यहाँ पर? NaCl बचता है और यहाँ आपका HCl भी बचता है. करेक्ट ना? बट इसमें से एक तो कैंसिल हो जाता है आपका Na और Cl यहाँ पर है, राइट ना? यू हैव NaNO2 प्लस HCl है ना ऑलरेडी यहाँ पर, करेक्ट, राइट ना? दिस इज आल्सो रिएक्टेंट पार्ट ओनली यहाँ पर का, करेक्ट. सो लाइक दैट. बट हाउएवर ये इसको कैंसिल कर दिया तो फिर HNO2 नहीं बचेगा अपना, है कि नहीं? HNO2 ले लो और NaCl यहाँ पर आया है. इफ NaCl इज देयर, ये NaCl कैंसिल हो जाती है, ये Na और Cl को कैंसिल कर दिया, दोनों एक ही साइड में कैंसिल हो गए. ओके, HNO2 बचता है, ठीक है. HCl फर्दर रिमेन्स आल्सो. So HCl is also there, but majorly है ना, we are not concerned with the byproducts. We are more concerned with the alcohol and the N2 which is getting formed. Okay. So water and HCl will be remain, but majorly we are concerned with what the main products are getting formed is your alcohol and your N2. Now we'll see the mechanism. There you will understand more details. कौन किधर जा रहा है, ठीक है? Okay, like that. ठीक है. So इसको मिटा रहा हूँ मैं, राइट वाला पार्ट. तो फ्रॉम दिस आपका नाइट्रस एसिड बन के क्या मिला गया हमको? आपको नाइट्रोसोनियम आयन बना मिला, ठीक है. Now how this nitrosonium ion reacts with your 1 diagram, that we'll see. Okay. Now how it reacts with 1 degree amine. Let's take a 1 degree amine. ये RNH2 को ले लिया हमने, and it has lone pair plus. कौन रिएक्ट कर रहा है इसमें? अभी ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा? ये लोन पेयर जाके इसके ऊपर अटैक कर देगा, है कि नहीं? सेम थिंग विच हैपेंस एवरी टाइम. लोन पेयर अटैक्स ऑन पॉजिटिव साइड. क्या आ गया मुझे? RNHHN, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? N डबल बॉन्ड O, और N के ऊपर N ने अभी यहाँ पर दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो ये N के ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज, करेक्ट. दिस फॉर्म व्हाट मी, इसने क्या मिला दिया मुझे? प्लस चार्ज दे दिया, ठीक है. अब आगे क्या होगा? ये पानी तो है ना अपने पास, राइट? वी आर हैविंग दिस वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट विद अस, करेक्ट. ये पानी इधर से आ जाता है, फिर से पानी, और पानी जाके अटैक करता है लोन पेयर पे, है कि नहीं? लोन पेयर पे अटैक करेगा कि H पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन नाइट्रोजन बोथ आर व्हाट? बोथ आर इलेक्ट्रॉनिक्स. वाटर विल नॉट गो एंड अटैक ऑन नाइट्रोजन, water will go and attack on hydrogen. Why? Because these two hydrogens are acidic in nature, है ना? Why acidic in nature? Because nitrogen already electronegative, it's already pulling electron from hydrogen, है ना? And NO group is also electronegative, minus I effect show कर रहा है, तो H काफी हद तक acidic बन चुका है. Water goes and attacks on this H, and from this we get what? From this we are getting, right? We get RN. Then what we are getting? N double bond O. यहाँ पर क्या बचता है आपका? H, है ना? प्लस यू गेट व्हाट? प्लस हमको मिलता है H3O प्लस, ठीक है. अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है देखिए. नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज दैट दिस लोन पेयर इट अगेन गोज एंड अटैक्स. अब H3O प्लस है ना, करेक्ट. H3O प्लस पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जाके इस हाइड्रोजन को अटैक कर देता है यहाँ से, राइट. एंड वंस इट अटैक्स द हाइड्रोजन, व्हाट यू गेट इज RN N डबल बॉन्ड OH प्लस, अभी O के ऊपर प्लस आ गया चार्ज, getting a point. Okay, and in next step what happens now? This lone pair it comes here and this
पॉजिटिविटी गोज अवे, तो क्या आ गया आर एन डबल बॉन्ड एन OH, ऑक्सीजन का कर्जा चुकता हो गया, करेक्ट। अभी एन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, फिर से इसने दे दिया। ओके, एंड नाउ अगेन व्हाट वी हैड गॉट, इसमें से एक H गया तो पानी फिर से बचा ना अभी, OH2 remains again, है ना। तो again what happens is that this lone pair of oxygen again goes and attacks on this H of this. Again what happens is that Rn plus H double bond N and then OH2 plus बन गया। अब तो OH2 plus तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल है, करेक्ट ना, उसका उधर रुकने का कोई चांस ही नहीं है। N double bond N and then you get what, OH2 plus, okay, getting point, clear now? सर ते OH2 पहिल्याच स्टेप मध्ये OH2 कुठून आलं की आपण ते ऍक्वस मीडियम मध्ये करतोय म्हणून आलंय? हाँ इथून आला, इथून आला, इथून। हा ठीक आहे। ए वेट वेट, एक जगह हमने गलती कर दिया यहाँ पर, कि तुरंत नहीं अटैक करेगा इस पे, ये H3O प्लस बनना चाहिए तभी जाके अटैक करेगा, है ना। एक स्टेप हमने रुक गया, यहाँ पर OH2 प्लस था, ये O इस पे अटैक नहीं करेगा, क्या होगा पहले, ये H एसिडिक है, जैसे यहाँ पर इस इधर अटैक हुआ था, इस ये भी जाके इस H के ऊपर अटैक कर देता है। H leaves its electron to nitrogen, you get what, you will get Rn double bond N OH plus you get what, plus you get H3O plus, और ये लोन पर अभी जाके अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, लाइक दैट। और ये होने के बाद क्या मिल रहा है हमको, मिल रहा है Rn डबल बॉन्ड N OH2 प्लस, करेक्ट। फिर से N इधर आ जाता है और इसको निकाल देता है बाहर, एंड देन फाइनली वी गेट व्हाट, Rn ट्रिपल बॉन्ड N plus you get what, water, and that is our Rn2 plus which we had got na, correct, in previous reaction आया था क्या Rn2 plus, ये वाला, getting my point बच्चों, यहाँ तक समझ में आया क्या क्या हुआ यहाँ पर? समझे कि नहीं? एक मिनिट सर, Any doubt? सर ते शेवटचं जे आलंय ना कंपाऊंड, ते काय म्हणलं तुम्ही, N2 च काय होतं ते? Rn2 प्लस, जो आपण मागच्या वेळेस पाहिलं होतं इंटरमिडिएट जो येतोय मध्ये, ते NTCl तो जो सॉल्ट होता ते आहे का ते? हाँ राइट, करेक्ट। सर पण हे तर आपण कशासोबत, ते नायट्रोसोनियम आहे त्याच्यासोबत रिएक्शन केलेली ना, मग ते इथे कसं काय आलं? हो तेच म्हणतो, नायट्रोसोनियम कुठून आला, ऍसिड म्हणून आला ना नायट्रोसोनियम, तेच पाहिलं ना आपण।
नायट्रोसोनियम कुठून आला? म्हणजे मग पहिल्या रिएक्शन मध्ये H2Oच आहे ना, कारण इथे H2Oच निघते बाहेर. पहिल्या रिएक्शन मध्ये H2 च आहे. हा, स्टेप 1 पाहिला आपण HNO2 कसा बनला आणि HNO2 चा झाला HNO प्लस, लाईक दॅट. नाही ते नाही सर, ते आधी तुम्ही लिहिलेलं ना ते H2O का HCl मध्ये, हा ते पहिल्या रिएक्शन मध्ये H2Oच आहे ना म्हणजे. हा H2 च लिहा ना. हा H2 ठीक आहे. You got it? Okay, I'm moving ahead. If your R group now, if R is alkyl group, okay, what will happen? This will give me what? R plus plus N2 मिलता है, ठीक है ना? As soon as you increase temperature, N2 गैस बन के चले जाता है बाहर. It becomes N2. Now let's see for reaction for 3 degree amines. Okay, reaction for 2 degree and 3 degree we'll see. Okay. ठीक है, इससे अभी खिचड़ी नहीं होगा अपना, ठीक है नहीं?
तो क्या बोल रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर, रिएक्शन विथ 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन का आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्या करेंगे, R2NH है अपने पास, R2NH में क्या कर दिया हमने, NO प्लस को डाल दिया। यहाँ पर क्या होगा, लोन पे जाके इस पर अटैक कर देगा, लोन पर अटैक क्या मिल जाएगा हमको, R2N प्लस N डबल बॉन्ड O और ये H, करेक्ट, H तो है ना वैसे ही। अब वाटर मॉलिक्यूल लेके आएंगे हम लोग। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है H के ऊपर। ओके, दिस गिव्स मी व्हाट, दिस गिव्स मी R2N N डबल बॉन्ड O प्लस H3O plus, correct, got, so we get this product N nitrosoamine. Okay, N nitrosoamine, correct, which is a oily yellow liquid. Okay, N nitrosoamine. And then we have reaction with 3 degree amine. What we get is R3N plus NO plus, क्या करेगा, डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्या मिलेगा मुझे, I will get R3N N डबल बॉन्ड O plus, बस हो गया रिएक्शन। Getting a point? सर ते H3O पर्यंत का बरं कन्वर्ट करावं लागतं? H3O पर्यंत का बरं कन्वर्ट कर, म्हणजे आपण आतापर्यंत सगळ्या रिएक्शन मध्ये ते पहिले H3O साठीच थांबायचो ना, की H3O झाल्यावर मग ते फायनल रिएक्शन. हा, म्हणजे H3O प्लस झाला तरच ऑक्सिजनचा लोन पेअर त्याच्यावर अटॅक करू शकतो, लाईक दॅट, देन ओनली कॅन ऑक्सीजन पेयर अटैक ऑन दैट ना, ओके सर. लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। देखो जस्ट ये थोड़ा बाउंड्री डालने से कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है कि नहीं, और पीछे वाले में लग रहा है खिचड़ी, बराबर ना, है कि नहीं, पुढची स्लाइड दाखवा. ठीक आहे, वर्धा म्हणते ते ठीक आहे, पुढची स्लाइड दाखवते, बाकीचं नका सांगू, बरोबर ना, शांतच बसला होता, काय बोलत, ओके यू राइट, ओके सर ते आता इथे R&2 ला आपण असं का बरं केलंय? कुठे, इथे वरती का, हा हा, we are just seeing that if R is an alkyl group ना, it will break like that, R plus plus N2 की तरफ टूटेगा, and if R is an aryl group, it will break in a very different manner, that we'll see later, but just the case, that's what happened na here, that's how N2 got formed and alcohol came here, correct na, so it's R plus and OH minus came up like that, just अच्छा, a type of breaking which would happen like that. Okay, if R would have been a ring, then the circumstances would have been different, लेकिन वो रिंग का बाद में देखना है हमको, अभी नहीं देखना, अभी इसके लिए बस देखो अल्काइल ग्रुप में करके देखो, ठीक है, हो सर समजलं. लास्ट टाइम होमवर्क कहाँ तक दिया था मैंने आपको,
Can you remember still where I gave you homework last time? सर ते येल्लो लिक्विड काय लिहिलंय तुम्ही त्याच्या आधी? Oily. काय? Oily. ऑइल ते काय आहे? Oily yellow liquid. ते एन नायट्रोस अमाइन ते का? N-nitrosamine. ओके. फिर वो कलर क्या है? Yellow liquid. सर येलो के पहले कुछ लिखा है ना आपने? Oily liquid. Oily yellow liquid. ठीक है. एक्सरसाइज 2 में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 35 to 40. ठीक है, सॉल्व फ्रॉम 35 to 40. Okay, they are based on this concept only, kind of. थोड़ा इधर उधर का क्वेश्चन रहेगा. You will learn concepts by solving some extra questions also. Okay, so we'll have a break now, right? And then we take 5 minutes extra for solving this question 35 to 40.
then we'll discuss. Okay. Now we'll have our break. तो क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं. You can write third. Acylation of amines. Acylation of amines. थोड़ा बहुत पार्ट इसका पहले भी हमने देखा था, करेक्ट ना, acylation of amines का, if you remember, correct. But still once again we'll have a look at this very important reaction. ये क्या कर रहे हैं अभी इसमें हम लोग, ठीक, RNH2, okay, and then reacted with acyl chlorides, right. Now what will happen, this will go and attack here, this will come up, you will get what, you will get, you know, R NH2 तो है ही वैसा, इसके ऊपर प्लस चला गया, then what will get is C आएगा यहाँ पर, CO माइनस, करेक्ट, Cl, बराबर, और कुछ है, CH3 बचा है, CH3 बाकी है. ओके, अब होगा क्या यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर अभी अमाइड फॉर्म होने वाला है. मतलब यहाँ से HCl अभी निकलने वाला है बाहर. तो HCl बाहर निकलता है कैसे है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये दोनों H क्या है, दोनों H एसिडिक है, राइट. एंड नाइट्रोजन इफ इट वांट्स टू बी स्टेबल, H लीव्स फ्रॉम हियर, H चले जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़, अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके. ओके, सो दैट अ लोन पेयर कम्स ऑन नाइट्रोजन, एंड देन व्हाट हैपेंस इज देयर, यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ रेजोनेट करने की कोशिश करता है, और ये क्लोरीन को यहाँ से निकाल ही देता है. क्यों निकाल देता है, क्योंकि ये क्या है, अभी कार्बन का है 2p ऑर्बिटल और क्लोरीन का है 3p ऑर्बिटल, तो 2p 3p ऑर्बिटल कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए निकल जाता है. हमने ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में भी देखे थे, करेक्ट. तो ये क्या हुआ, क्लोरीन करके निकल गया, ठीक है, क्लोरीन करके निकल गया. बचता क्या हमारे पास अभी, अच्छा R, तो क्लोरीन गया और H के साथ मिल गया, प्लस क्या मिला, प्लस मुझे मिला HCl, करेक्ट. एंड दिस इज नथिंग बट योर अमाइड फॉर्म, amide which is formed, correct. Okay, so what is happening now here, that ये हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड और CH3 असाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया. ठीक है. So what is happening is generally here is that, right, replacement is happening, replacement of hydrogen on nitrogen, hydrogen present on nitrogen, by which group, by RC double bond O group, correct. This is called as your acylation reaction. This is called as what, this is called as acylation reaction. Okay, getting my point. सर हे अमाइड आणि अमाइन मध्ये काय फरक असतो? अमाइड म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप आहे तो, सी डबल बॉन्ड ग्रुप आहे तो अमाइड मध्ये. अमाइन मध्ये फक्त NH2 ग्रुप असतो. ओके सर, ठीक. अमाइड मीन्स सी डबल बॉन्ड ग्रुप इज प्रेजेंट, सी डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट, like that. That is amide. And this group is called as amide. ओके सर. वरचा ग्रुप आहे तो असाइल ग्रुप आहे. ठीक है, this is an acyl group. Amide group is this. Okay, like that. Now if I give you like this, ये करना है आपको, कर तो लो. H5NH2 plus CH3 C double bond OCl. तर ते ब्लू मध्ये लिहिलंय ते फर्स्ट रिॲक्शन साठी आहे का, सेकंड याच्यासाठी आहे, स्टेपसाठी? कुठला पहिलेच ब्लू मध्ये आहे, लिहिलंय ते. हाँ याच्यासाठीच आहे, फर्स्ट साठी. ओके, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लिखना है आपको.
सेम करना है, कुछ नहीं करना, आर को बस C2H5 की जगह लिखना है, ठीक है। ये है 1 2, यदि मैं आपको दूं C2H5 twice of NH, plus CH3 double bond of Cl, no? In presence of pyridine and heat gives me what? सर तुम्ही ते वरती मेकॅनिझम दाखवलं तिथं पेरिडिन हे आहे का Oh, कॅटलिस्ट? yeah, pyridine we use generally here. पेरिडिन आणि हीट ना? Yeah. ओके सर. तो इसका क्या होगा देखो, इसका होगा C2H5 NH C double bond O CH3, करेक्ट, सिंपल। और इसका क्या होगा, इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सिर्फ H को रिप्लेस करना है ना, एक H तो वैसे ही रहता है, तो यहाँ पर एक H रहा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा C2H5 twice and C double bond O CH3, करेक्ट। क्या बचेगा यहाँ पर C2H5 twice ओके। तो सेम थिंग क्या, बस कुछ नहीं, रिप्लेस करना है, दिमाग वाला काम नहीं है बच्चों इसमें, कुछ समझ में आई मेरी बात? And one more case, just like Grignard reagent also you used to see that one more thing could happen is that now that if I take C2H5 NH2 and if I react it with this CH3 C double bond O C double bond O CH3, क्या होगा, ये जाके अटैक करेगा इधर, ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके नीचे आएगा और इसको हकल देगा बाहर, ओके, राइट। एंड देन यू गेट प्रोडक्ट एज व्हाट, आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो क्या है, एक तो आपको ये मिलेगा, वन तो you'll get CH3 C double bond O OH, यानी ये वाला CH3 double bond O और ये N का एक H, बाकी तो वैसे ही रहेगा ग्रुप, बाकी क्या मिलेगा आपको C2H5 N C2H5 NH C double bond O CH3, करेक्ट। यहाँ पर Cl निकला बाहर, यहाँ पर क्या निकला, ये पूरा ग्रुप निकल गया बाहर, है ना, सेम एज वी यूज्ड टू सी इन द Grignard reagent वाला पार्ट, गेटिंग माय पॉइंट? सर हा कंपाऊंड अनहायड्रेट करेक्ट, एनहाइड्राइड, तर हे दोन वेगळे कंपाऊंड फॉर्म झाले आहेत, राईट? हो, दोन कमरे, एक ऍसिड फॉर्म झालाय आणि एक तुमचा अमाइड फॉर्म झालाय, इथेनमाइड। सर तुम्ही त्या दोन कंपाऊंड मध्ये एक लाईन काढता का, म्हणजे सेपरेशन कळेल? कुठलं, वरचं खालचं का दुसरे? सर ब्लू मध्ये जे लास्टच्या दोन लिहिल्यात ना त्यांच्यामध्ये. ओके, now let's move ahead to next.
समजतंय का लिहिलेलं मी? हो सर, बऱ्यापैकी समजतं. गुड. ठीक है, ठीक है. Ishna, you understand what I have written? हो सर. नक्की? जे नाही समजलं ते विचारलं तुम्हाला. ओके ओके, गुड गुड गुड. ठीक आहे, प्रयत्न करा समजायचं जेवढं. सर तुम्ही असं एवढं म्हणजे एवढं काय म्हणतात, सगळं असं एकत्र का बरं लिहितात? थोडस असं सुटसुटीत लिहिलं तर बरं होईल म्हणजे. स्प्रेड करून का? हा, म्हणजे ते रिॲक्शन समजायला थोडस सोपं जाईल. What happens now? I was doing that only previously. Correct ना? But that वो क्या ज्यादा बड़ा बड़ा लिखता था मैं, तो एक ही पेज पे एक रिएक्शन होता था अपना, और lot of time is to go. What will happen? You will copy that same thing, same time will go, and then next page you have to go again, then write on one more reaction. Correct na? So this save times also, but yeah, I'll try to write more. Correct. ओके सर. यहाँ पर तो जजमेंट चूक गया मेरा, यहाँ पर कुछ और जजमेंट है मेरा, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर. But yes, we'll go. That's why I'm drawing this partition line so that it's easier to understand also. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी क्या देख रहे थे हम लोग? नेक्स्ट रिएक्शन हमने ऑलरेडी किया है बच्चों. फोर्थ रिएक्शन कॉल्ड एज व्हाट? योर अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस. अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस. ठीक है, ये किया है हमने पहले. हॉफमैन्स एग्जिस्टिव अल्काइलेशन याद आ रहा है तुमको कुछ? हॉफमैन अल्काइलेशन किया था कि नहीं पिछली बार बच्चों? रिमेम्बरिंग और नो? नो सर. अरे बाप रे, कैसे? मैंने किया था ना, हमने डिटेल में लिखा था. हॉफमैन के बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे हमने. हॉफमैन सर एलिमिनेशन. एकदा लिहून दाखवा ना, मग थोडं लक्षात येईल. See, we had done this reaction, correct ना? अमोनिया में आप डालो RX, इसका बनता है क्या? This goes and attacks on the R, correct? क्या बनता है, हमको मिलता है, we get RNH2 plus HX, है ना? इसमें यदि हमने डाला क्या, इसमें यदि हमने डाला फिर से CH3Br, तो क्या मिलता है हमको? या फिर RX डालते हैं, RX लिखते हैं, आसान पड़ेगा थोड़ा. इसमें डाल दिया मैंने RX, तो क्या मिलेगा मुझे? R2NH plus HX. R2NH में मैंने डाल दिया फिर से RX, क्या मिलता है मुझे? I get R3N plus HX. R3N में फिर से मैंने डाल दिया RX, क्या मिलता है मुझे? मुझे मिलता है R4N plus X minus, which is nothing but your quaternary ammonium salt. सर हे आपण आताच केलं होतं ना 2 लेक्चर आधी, का लास्ट लेक्चरलाच? हो, तेच म्हणतोय मी. मग तुम्ही लास्ट इयर का बोलले? लास्ट लेक्चरच म्हटलो. लास्ट इयर म्हटलो का मी? मला ऐकू आलं असेल मे बी, म्हणून मी म्हणलं नाही आठवत. मला तर आठवतं मी लास्ट लेक्चर म्हटलं असेल, मला पण नाही आठवत आता, पण हो केलं होतं आपण हे. हो हो केलं होतं. आणि त्याच्या पुढची रिएक्शन आपली फिफ्थ म्हणजे आहे आपली हॉफमॅन एक्झॉस्टिव्ह. हॉफमॅन एलिमिनेशन केलं होतं का नाही हॉफमॅन?
हो. Hoffman elimination means R4N plus X minus, you put AgOH there, you will get R4N plus OH minus, and then you heat, you get what? Hoffman alkene. Correct ना? आपण ते भरपूर क्वेश्चन पण सॉल्व्ह केले त्याच्यात. हॉफमॅन अल्किन कसा बनवायचा, तर ते परत नाही करणार मी. But in Hoffman elimination, the major product formed is what? It is a least substituted alkene is the major product which is formed. Okay, like that. Yes, sir. ठीक है. आणि sixth reaction is your reaction with carbonyl compounds. Okay, reaction with carbonyl compounds. What we have done, this also we have done. RNH2 you react with R dash C double bond O. R double dash what you get is ये वाटर निकल H2O निकल जाता है यहाँ से, तो क्या मिलता है हमको? R dash C double bond N, what we get is NR, correct? R double dash plus water. This is called as Skiff's base. Okay, Skiff's base. And you have R2NH plus, suppose if I take here R dash CH2 C double bond O, R double dash. What you will get is, you get is what here? You get an enamine. Again here water goes off. Okay, कैसे कैसे आता है water? ये एक H, ये एक H और ये एक O, तो क्या मिलता है हमको? R2N double bond, sorry, R2 क्या है अपना? ये तो ऊपर आएगा ना बच्चों. R dash से हमको चालू करना है. क्या है R dash CH double bond C double bond. इसको थोड़ा और जगह लगेगा लिखने के लिए. So what we get R dash double bond C R double dash. क्या मिलता है हमको यहाँ पर? ऊपर था हमारा ना NR2 ऊपर आ गया. Okay, plus you get water with that. Okay, and this compound is called as what? Enamine. ये compound को क्या कहते हैं? Enamine. This is called. This also we had done in last lecture or last lecture, I guess. ठीक है, तो इस तरह से अपने 6 रिएक्शन हो चुके हैं. सॉरी, कितने हो? 6 और 7 हो. या तो 2 रिएक्शन और बाकी है हमारे. सर ते कार्बोनिल है का कार्बोक्सिल है? कार्बोनिल कंपाउंड. Okay, done. एक मिनिट. सर हॉफमॅनच्या एक्झॉस्टिव्ह अल्कायलेशनला AgOH लागत नाही ना? हॉफमॅन एक्झिस्टिव्ह नाही लागत, पण जनरली सॉल्ट टू OH परत जायला AgOH लागतो असं.
है ना? Yes. So you can do Hoffman only if OH is present. So for that you will have to include that also in the reaction. Okay, sir. ओके चलो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? ये इसका स्क्रीनशॉट निकालो जिसका नहीं हुआ है उसको, नहीं तो मैं नोट्स भेजता हूँ वैसे क्लास के बाद, तब लिख लेना, ठीक है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा था अपना 7th? ओके, अब 2 रिएक्शन और बाकी है और दोनों ही 2 टेस्ट है। करेक्ट, दोनों ही क्या है? दोनों ही टेस्ट है ना? तो विल वो पार्टीशन फर्स्ट ओनली। Okay, and the first of all which we get is what? Your Hinsberg test. It's called as what? Iceberg nahi, Hinsberg test we get. Okay, we get a Hinsberg test. Okay, now this test Hinsberg has a reagent और उसके reagent का नाम क्या है? C6H5SO2Cl. okay, C6H5SO2Cl, है ना? This is a Hinsberg reagent. Hinsberg reagent, correct? Also known by the name benzene sulfonyl chloride. Okay, benzene sulfonyl chloride, you know? Okay, and why this test is done? Why test is done for Hinsberg? Anyone knows why the test is done? Okay, test is used to differentiate, you know? So any test in organic chemistry is done to differentiate what? To differentiate and separate. Hinsberg test is for what? To differentiate and separate in a different degrees of amines, different degrees of amines को differentiate और separate करने के लिए हम लोग Hinsberg test का इस्तेमाल करते हैं. Okay, now let's again come back to your part 1 is nothing but your correct 1 degree amine. 1 degree amine के लिए देखो कैसे होता है अभी. तो ये रिएजेंट अपना है, इसको लिख लेते हैं हम लोग ऐसा, है ना? SO2Cl, करेक्ट? प्लस क्या डाल दिया मैं इसमें मैंने क्या डाल दिया? 1 डिग्री अमाइन, है ना? RNH2 is 1 डिग्री अमाइन, करेक्ट? वो क्या रहा है इसमें? वो क्या रहा है? यहाँ से HCl चले जाएगा बच्चों, ठीक है? HCl यहाँ से चले जाएगा, क्या मिलेगा हमको? जैसे HCl चले जाता है हमको क्या मिलता है? रिंग तो वैसे रहेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. उसके बाद क्या बचा है अपना? N, R और H, करेक्ट? और जब बच्चों ये H है ना, ये H, correct, this H is what? It's acidic in nature. This H is what? This H is acidic in nature.
और एसिडिक होने के कारण क्या होता है कि this reaction goes proceed something like this. एसिडिक होने की वजह से क्या होता है, यदि इसको मैं डाल दूं KOH में, करेक्ट, तो KOH में क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, डिसॉल्व्स इन KOH। ओके, इसलिए H की जगह क्या आ जाता है, H की जगह भी K आ जाता है ना। सो व्हाट यू गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट इज दिस वन, समथिंग लाइक दिस, double bond O and then N and then K and then R, right, and then K and then R. Okay, so what is happening is that important thing is that this dissolves in KOH, dissolves in KOH. समझ में आया है पहला वाला क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है, dissolves in KOH. Now let's have a look at the second. So you can mark this very important, that सर डिसॉल्व्स इन KOH KOH म्हणजे हा पाणी बनून जातं इकडे, H2O बनतं आणि H च्या जागी K येऊन लागतो इथे. That's what is replacing, ना, H is getting replaced by K. ओके सर. Now second one, second 2 degree amine. 2 degree amine का क्या होगा देखो अभी आप, here also we take this same reagent of this H double bond to double bond to Cl प्लस क्या मिलता है हमको, H N R और R, राइट। अभी इसमें भी क्या होता है, क्या निकल जाता है बाहर, आपका ये निकल जाता है बाहर, करेक्ट ना, HCl बाहर निकल जाता है, करेक्ट ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसा, you get what, NR2, and speciality for this is what it is, insoluble in base. Why this is insoluble in base, can anyone tell? सर अल्फा एचएस नाही राहिला त्याच्यात. Very good. No H is there now, how it will be insoluble? And 3 degree amine is what, 3 degree amine, because यहाँ पर H है ही नहीं 3 डिग्री में, तो क्या रहेगा, नो रिएक्शन फॉर 3 डिग्री amine. ओके, 1 डिग्री के लिए तो डिसॉल्व होता है, 2 डिग्री के लिए डिसॉल्व नहीं होता, 3 डिग्री के लिए नो रिएक्शन, रिएक्शन होता ही नहीं है 3 डिग्री के लिए। समझ में आई मेरी बात? तो ये है आपका हिंसबर्ग टेस्ट जो बताता है कैसे 1 डिग्री डिसॉल्व होता है, 2 डिग्री डिसॉल्व नहीं होता, और 3 डिग्री का कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। समझ में आई मेरी बात बच्चों? सर ती आधीची आपण जी नायट्रस ऍसिड टेस्ट केली होती त्याच्यात पण हेच होतं ना, 1 डिग्री 2 डिग्री मध्ये डिफरन्शिएट करायचं होतं. करेक्ट, देयर वर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ना गेटिंग फॉर्म्ड, राइट, हाँ यस. करेक्ट। इसको लिख लो, वन मोर रिएक्शन इज रिमेनिंग, इज कॉल्ड एज कार्बिलमाइन टेस्ट।
ठीक है, अभी अगले रिएक्शन में जाते हैं जिसका नाम है ना कार्बिलामाइन टेस्ट। ओके, कार्बिलामाइन टेस्ट, कार्बिलामाइन टेस्ट। Okay. And now what is specialty that? तो ये इसका specialty क्या है? So only 1 degree amine gives this reaction. Okay. So this reaction is a chemical test. It's a chemical test for the detection of 1 degree amine. Okay. होता क्या देखो यहाँ पे RNH2 ले लिया प्लस CHCl3 और ये इसकी रिएजेंट है। ओके, CHCl और 3 KOH है ना। In heating you get what? Heating you get Rn plus and Cl minus plus KCl plus trace of ठीक है। तो ये है कार्बिलामाइन आपका टेस्ट ना। कौन देता है? बस only 1 degree and 1 degree amine gives this test. Okay. सर हे फक्त 1 डिग्रीज देते का? Only 1 degree. काही रिझन? Reason is है ना आयसोसायनाइड ग्रुप बनतो 1 डिग्री मध्ये, बरोबर ना। 1 डिग्री असलं तर आयसोसायनाइड बनतो, पण 2 डिग्री बनला तर तसं काही बनत नाही. जस्ट बाय द प्रेझेन्स ऑफ आयसोसायनाइड वी अंडरस्टँड दैट ओके इट्स व्हेरी डेंजरस. ओके, 2 degree and 3 degree will not give isocyanate, only 1 degree gives isocyanate. That's how it's a test. ओके. ते Cl आहे की C आहे N ट्रिपल बॉन्ड सोबत? Cl. मग आयसोसायनाइड कुठे बनते? Hey, wait. Cl नहीं है तो एक मिनट. हाँ, that is carbon only ना. Isocyanate carbon. This one ना. That is carbon. Have a look. This you are having a Cl, Cl and Cl, correct? And then H you have. KOH gives me OH minus ions. Okay. OH minus goes and attacks on this H. What you get now here is Cl, C, Cl, Cl. Correct. Therefore you get what here? प्लस चार्ज मिलेगा कि प्लस चार्ज नहीं मिलेगा यहाँ पर बच्चों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना अभी. ये कार्बन है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को छोड़ गया, इसलिए कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, कार्बन पे है ना. एंड फर्दर व्हाट हैपेंस टू दिस इज दैट कि इसमें से एक क्लोरीन भी बाहर निकल आ जाता है. 1 क्लोरीन कम्स आउट. तो हे आपका तुम्ही याची मेकॅनिझम सांगताय का? Cl plus you get CCl2 plus you get water. अरे कार्बन पे अभी क्या 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एक्स्ट्रा, लेकिन एक तो था इधर
अब एक तो एक क्लोरीन भी छोड़ के चले जाता है, मतलब क्लोरीन लेके जाता है अपना इलेक्ट्रॉन साइड में। तो ये जो नेगेटिव चार्ज था नॉन पेयर वाला वो वैसे का वैसे रहेगा अभी, इट्स काइंड ऑफ इन न्यूट्रल फॉर्म, राइट। तो ये नेगेटिविटी अभी हट गया है इसके ऊपर से, एंड काइंड ऑफ इट्स न्यूट्रल फॉर्म नाउ। ओके, अब होता क्या है बच्चों कि ना कार्बन का क्या है, अभी कार्बन खाली बैठा है, करेक्ट ना, कार्बन खाली बैठा है। तो होता क्या है, आपका जो RNH2 है, राइट, CCl2 है ऑलरेडी, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन वांट्स टू गिव हिज इलेक्ट्रॉन टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है, उसको दया देके उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। And once it gives something like this, RNH, NH, and then N gets plus charge, right? You form CCl, Cl, and then carbon gets again the negative charge. ये कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन ना बच्चों, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं, खुद के इलेक्ट्रॉन है अपने, समझ में आ रही मेरी बात। अभी इससे लोन पेयर आ गया तो क्या हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया कार्बन फिर से। नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंड नाउ, अगेन यू हैव KOH एक्स्ट्रा, बहुत सारे मॉलिक्यूल डाले KOH के इसमें, है ना। तो OH माइनस गोज एंड अटैक्स ऑन दिस H, H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के इधर चले जाता है, क्या आ गया हमको, you get RNH, right, you get RNH, okay, and then नाइट्रोजन है क्या आपके पास, क्या गया, नाइट्रोजन तो ये हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, करेक्ट, get C minus Cl and then Cl, okay. Now nitrogen has already lone pair of electrons, correct. Nitrogen, what it does is that and nitrogen tries to pair with carbon, है ना, एंड कार्बन ऑलरेडी हैज इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन क्या करता है, Cl को बाहर निकाल लेता है, नहीं, किक्स आउट Cl, ओके, and kicks out Cl, correct. Therefore what we get is, we get something like this, we get what, we get R N, and now N has given electron to carbon, इसलिए N के ऊपर पॉजिटिव चलेगा, H and then C and then Cl, correct, RNH C and then Cl, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अभी डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, एक Cl तो चले गया बाहर, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, OH है, फिर से OH क्या करेगा, OH इस H पे अटैक करेगा, है ना, H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा इधर, okay. So this, you know, OH attacks on this H and then water is formed again, okay. अब फाइनली क्या होता है, इनके पास लोन पेयर है, लोन पेयर गिव्स हियर and this Cl minus goes out, so finally get is what, finally get is R, you know, finally get something like this, what do you get is R, B, N क्या करता है, N plus C, RN plus and then C, ओके। तो ये बन गया आपका आइसोसाइनेट यहाँ पर, बस हो गया आपका रिएक्शन यहीं पे, RN ट्रिपल बॉन्ड C। अब लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है कि 5 बॉन्ड है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है C and C minus, okay. Any doubts still here?
Any doubt anyone has? We move ahead now. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. सर 1 मिनिट मागची स्लाइड दाखवाल का? माझं लिहायचं आहे थोडंसं, 1 मिनिट. हा ओके ठीक आहे. Okay, now you write very important. Now we are going to see very important topic called as your diazonium salts. Okay, diazonium salts. What is the formula? Formula for that is R into plus X minus. Especially for now, we are going to say R is an aryl group. Okay, and this X minus, it could be what? It could be Cl minus, it could be Br minus, it could be HSO4 minus, it could be BF4 minus. Right, BF4 है ना, ठीक है, BF4 बीच में I माइनस और वो सिंपल होते हैं. और and then what is your N2 group? N2 group is your diazonium group. And N2 plus group is what? Your diazonium groups. Okay, now what happens is generally your primary aliphatic amines now form very highly unstable alkyl diazonium salts. Okay, primary aliphatic amines form highly unstable alkyl diazonium salts, right? Primary aliphatic amines. Okay. And then we have a primary aromatic amines. Again, क्या करते देखो दोनों. सर ते आर आपण फक्त अरायल ग्रुप काय नाही समजलं मला. तो देखो क्या हो रहा है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस. ठीक है, यहाँ पर एरोमेटिक एलिफेटिक का कुछ नहीं दिखने वाला, सब कुछ क्या दिखने वाले हम लोग, किसका दिखने वाले, वी आर ऑल गोइंग टू सी ऑफ इज व्हाट, एरोमेटिक अमाइंस. बट प्राइमरी एरोमेटिक एलिफेटिक अमाइंस व्हाट डू दे फॉर्म वेरी highly unstable alkyl diazonium salts. Okay, and then primary aromatic amines what they do, देखो कैसे highly unstable, बहुत जैसे Rn2 plus था, टूट जाता था फटाफट से, ना. But primary aromatic what they do is that they form arene diazonium salts. They form that arene diazonium salts, which are
stable for which are stable for no, which are stable for short period of time. Which are stable for short period of time. Which are stable for short period of time. Solution at low temperature. Okay, time solution at low temperature. 273 to 278 Kelvin. यहाँ तक वो क्या रहेंगे, यहाँ तक वो स्टेबल रहेंगे. ओके. नाउ किसी ये जो डायजोनियम बना है ये क्या करता है, ये रेजोनेंस भी शो करता है. इसमें स्टेबिलिटी आया तो आया क्यों बच्चों? व्हाई डिड दैट स्टेबिलिटी कम हियर? स्टेबिलिटी केम, स्टेबिलिटी इज ड्यू टू करेक्ट, स्टेबिलिटी इज ड्यू टू रेजोनेंस, है ना. कैसे रेजोनेंस होता है? करेक्ट. ये क्या है आपका N2+ है ना, राइट. यहाँ पर लोन पेयर है तो होता क्या है यहाँ पर, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, है ना. दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं. अब अंदर का रिंग तो ये से नहीं निकालेंगे हम लोग, ऐसा लिखेंगे इसको, करेक्ट ना. और ये कुछ ऐसा जाता है. ओके. आगे क्या होगा फिर? यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा. यहाँ पर कौन सा चार्ज है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ओके. यहाँ सर पर तो NN मधला सिंगल बॉन्ड आहे का? कुठला? हाँ, NN डबल बॉन्ड. सर म्हणजे दोन्ही डबल डबलच आहेत का? हा डबल करेक्ट. म्हणून N वरती प्लस चार्ज आला ना. ओके सर. Okay. And now next what will happen is that this will keep on resonating. This will come here, this will come here, right? And finally what will happen is that this will again come back here and this will again come back here. Okay. तो पूरा रेजोनेंस का चक्कर चलते रहेगा. कब तक चलते रहेगा? जब तक फिर से ये रिस्टोर नहीं हो जाता, रिंग ऐसा नहीं आ जाता. कैसे आ गया ना, कैसा आ जाएगा ऐसा वाला बॉन्ड जब तक घूम नहीं जाते तब तक, और ये फिर ऐसा अपना रिस्टोर हो जाएगा यहाँ पर. ओके. तो आ गया फिर से वैसे स्ट्रक्चर अपना. तो नेगेटिव चार्ज नहीं निकाल तो भी चलेगा, है ना. तो इट गेट्स स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस. ओके. नाउ वी वांट टू सी कि प्रिपरेशन होता कैसे होगा इसका, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, है ना. सो फर्स्ट वी टेक NH2, राइट. और NH2 को हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर दें? We react with NaNO2+ twice of HCl in presence of 273 to 288 to 278 Kelvin, है ना. What you get is simple. Directly get N2+ Cl minus, correct. Plus you will get NaCl plus twice of H2, है ना. This is how your diazonium salts are prepared. ये हो गया preparation. Once you have seen preparation, we can quickly move on to see the reactions. Okay. Now सबसे पहला reaction, famous reaction है आपका Sandmeyer reaction.
सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, अभी ये रिंग को मैं अभी रिंग नहीं लिखने वाला बच्चों, ध्यान से सुनो, सुन रहे हो ना? रिंग को मैं क्या लिखूंगा, बस अराइल लिखूंगा मैं अभी, अराइल। ओके, अराइल into plus x minus, ठीक है। and what it can do now is that it can have 3 reactions, correct? CO2 Cl2 और HCl, ये हमने देखा था कहाँ पे, सैंड में रिएक्शन देखा, हेलोजन कंपाउंड्स में, याद आ रहा है क्या? CO2 Br2 and HBr, CuCN and KCN, करेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है इसका प्रोडक्ट हमको पता है डायरेक्टली, we get chlorobenzene, here we get bromobenzene, and here you get what, cyanobenzene, डायरेक्टली रिप्लेस इट, प्लस यहाँ पर मिलता है N2 plus N2 plus N2, okay, this is first reaction. Second reaction also famous, called as Gattermann. Gattermann reaction, what happens here is that I take AR into plus and X minus, है ना? What you do is that Cu and then what, Gattermann cause Cu and then HCl, यहाँ पर Cu2 Cl2 HCl है, यहाँ पर सिर्फ Cu और HCl, and one more could be यहाँ पर Cu and ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, प्रोडक्ट सेम ही आएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, ArCl क्लोरोबेंजीन एंड देन यू गेट ब्रोमोबेंजीन प्लस, लेकिन यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में क्या प्लस क्या आएगा आपको, N2 तो आएगा ही, है ना? N2 तो निकलता ही है बाहर, प्लस क्या आएगा, प्लस मिलेगा आपको okay, getting my point? So you get this products mean ArCl, ArBr, ArCN, AlCl, ArCl, ArBr, okay, these are some of the important reactions. और एक दो रिएक्शन है important जिसमें आप लोग आयोडोबेंजीन कैसे बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, है ना, वो हमको एक दो रिएक्शन देखेंगे हम लोग आज, and then we'll stop, okay? बस आगे 2-3 रिएक्शन है इसके सिंपल वाले, उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है? हो गया? बच्चों बड़े क्या आगे? Yes, sir. ठीक है, तो थर्ड वाला रिएक्शन क्या लिखना है अभी हमको, AR इंटू प्लस Cl माइनस, है ना, प्लस इसमें डाल दो KI, ठीक है, क्या मिलता है, आयोडोबेंजीन प्लस
KCl plus, you get N2. Okay. Fourth reaction, you have Ar N2 plus Cl minus. You put HBF4, you get what? Fluorobenzene, right? लेकिन इसके पहले एक इंटरमीडिएट आता है, वो लिख लो। एक इंटरमीडिएट क्या आता है आपको? इंटरमीडिएट Ar N2 प्लस Cl माइनस चले जाता है यहाँ से, है ना? क्या आता है? BF4 माइनस आ जाता है। ये H और ये Cl चले जाते हैं अपने अपना ये करने के लिए। ओके और इसको जब हीट करते हैं आगे हम लोग, when we heat it, what you get is ARF plus BF3 plus N2 गैस, है ना? सो फ्लोरोबेंजीन मिल गया यहाँ से। फिफ्थ रिएक्शन what we have, N2 plus Cl minus plus you add H3PO2 plus you add water, है ना? And what you get from this is, क्या क्या मिलता है यहाँ से? Here directly we get benzene, कुछ नहीं मिलता है यहाँ से। We get benzene plus we get N2 plus we get phosphorus acid plus we get HCl. Okay, so reaction for preparation of benzene also is there. Okay, सर ते ARH में benzene. हाँ बेंजीन अराइल ग्रुप और ऊपर है ना, ऊपर H है बस। Like that only, no? Okay. हाँ, yes. Now one more way is there you can form benzene is that take Ar N2 plus Cl minus plus you add ethanol in that. Okay. सर हे लूज रिएक्शन्स लिहून देतात की यांचे पण काही नाव आहे? हाँ स्पेसिफिक प्रत्येकाचे नाव असलं पाहिजे गरजेच नाही। मोस्टली प्रोडक्ट्स ज्यांचे नाव आहे ते लिहितोय मी, पहिले दोघांचेच नाव होती, यांचे पण नाव आहेत बट नॉट नीडेड एज सच। ओके सर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आता है, इधर भी आपको बेंजीन मिलता है, ARH प्लस यू गेट N2 प्लस हियर यू गेट व्हाट, acetaldehyde plus HCl. Okay, like that. Now last reaction, yeah, if we want phenol, what you do is that N2 plus Cl minus में आप पानी डाल दो, पानी डालने में क्या आएगा आपको, AROH, you will get phenol plus N2 plus HCl. Okay, like that. And then one last reaction, but not last but not the least, is your replacement by NO2 group, ना? मतलब N2 plus Cl minus की जगह मुझे क्या लाना है, NO2 लाना है ऊपर। क्या करूंगा मैं, इसमें डाल दो आप HBF4, क्या आएगा मुझे, N2 plus एंड BF4 माइनस, करेक्ट। और इसमें आप डाल दो अभी क्या, add here NaNO2 and copper and then heat it, and then directly you get what, you get NO2 on top. Okay, you get NO2 plus you get N2 plus you get NaBF4, मैं Na चले जाता है BF4 के साथ, N2 हीट करके चले जाता है और NO2 यहाँ पर आ जाता है ऊपर। So like that. Got it? Okay, so all these reactions are connected to your benzene diazonium salts. Okay.
So we'll end now with this part. And I'll send you homework. So you can at least solve now questions which are related to your diazonium groups. And also some reactions are remaining for aniline also. Reactions of aniline, but you already know reactions of aniline. Aniline is what? Aniline is ortho-para directing group. तो बस NO2 डाल दिया तो कहाँ पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पे. SO3 डाल दिया तो कहाँ आएगा? ऑर्थो और पैरा पे. Cl डाल दिया तो क्या कहाँ पर आएगा? ऑर्थो पैरा पे. तो रिएक्शन बड़े सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ है नहीं. तो उसका भी होमवर्क देता हूँ मैं आपको, वो भी आप कर लेना. Okay, so thank you very much, and let's meet next week. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so we'll end now with this. ये लिख लिया क्या सबने?